माइग्रेशन का मतलब है सबसे पहले कि हम लोग एक जगह से दूसरे जगह जाना. It's a logical term in English. So that's why आप कोई मेल बॉक्स या डेटा मूव करते हो तो it is also known as migration. किसी एक जगह से दूसरी जगह में पहुंचाना, पूरी मतलब गांव को खाली करना एक तरफ से. तो that's why किस वजह से ऑफिस 365 में मतलब व्हाट आर द रीजंस व्हाई इट इज बीन रिक्वायर्ड, क्या क्या स्टेप्स लेते हैं और क्या रिक्वायरमेंट होती है. पर माइग्रेशन का मेन स्टैंड पॉइंट ये होती है कि कितने साइज लाइक ऑफिस 365 से आप कैसे मतलब ट्रांसफर करते हो, लाइक डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्गेनाइजेशन. आपकी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप सपोज कर लो कि आप जी सूट इस्तेमाल करते हो जो जीमेल की है, तो आप कोई और माइग्रेशन नहीं कर पाते हो, खाली IMAP माइग्रेशन कर पाते हो. और दूसरा है वर्कस्पेस माइग्रेशन. पर इसमें भी उनका लिमिटेशन होती है, साइज लिमिटेशन. तो माइग्रेशन इसमें काम आती है. मेन थिंग यू नीड टू नो इज दैट माइग्रेशन इज मोस्टली यूज बिफोर कैलकुलेटिंग. एक तो साइज देखती है मेल बॉक्स की, दूसरा है मेन रीजन फॉर कोएग्जिस्टेंस. लाइक फॉर आपको रखनी है ऑन प्रेम भी और क्लाउड भी चाहते हो, लाइक क्लाउड की सर्विसेज इस्तेमाल करना चाहते हो, तो कोएग्जिस्टेंस होती है. तो दोनों साइज डिपेंड करती है आपकी. जब आप माइग्रेट करते हो तो आप PST माइग्रेशन करना चाहते हो तो उसमें भी साइज डिपेंड करता है. और मेन माइग्रेशन का मोटिव होता है कि एकदम सिक्योर वे से जाए और साथ ही साथ मतलब स्थिर रहे और क्या बोलते हैं कोई फास्ट भी रहे with the protected shield. There are many paths to migrate data from one premises email organization to Office 365 online. When planning a migration to Exchange Online, a common question is about how to improve the performance of data migrations and optimize migration velocity. Many decision factors comes into play when determining the migration path, and they highlight the importance of upfront planning. वही planning करते हैं. So depending on the planning, like if you want, you need to know the environment of the where it's getting migrated, and also the size of the mailboxes and of the size of the where you will get to migrate depending upon it. And there are 4 types of migration which we will later on talk about it. So the following items need to be discovered and evaluated in order to pull together a migration strategy and deployment plan. Size. The number of mailboxes as well as size of mailboxes should be investigated. It's quite possible to migrate using PST export and import. However, this may not make sense for anything over few mailboxes. Size will also impact migration timelines and in turn of impact coexistence requirements. Coexistence. What level of coexistence do you need during the migration process? If the entire migration take place over a weekend, this may be very simple decision factor. Often, however, you will have a period of time during the migration where you need to coexist. Like if you example give करूँगी where you need to exist and coexistence. जैसे example आपको migrate करना है mailbox, मगर migration can take up to 7 to 1 month also, depending upon the size of the mailboxes. But you don't want to disrupt the mail flow, so that's why coexistence is required during that moment of time. So the customer desire and expectations for the coexistence period will impact this strategy. So the first thing is that provisioning. How do you plan to provision the user accounts? Are you planning to leverage a synchronization tool, for example, Nursing or any other tool or third-party tool? Or you provisioning with an import? Is the organization import meaning a CSV file बनाएंगे जिसमें आप user और email address और password बना के वो CSV file डाल के basically it's just a CSV file, a batch file you manually create for the new accounts. Migration source. आप source जानना चाहते हो, what you are migrating from can have a huge impact on your organization. Is the source is Exchange, IMAP or other email solutions? Do you need to migrate calendar information contacts? The migration source can greatly impact the ease of which these items can be migrated. आप migration में खाली mailbox में migrate नहीं करते हो, calendar information, contacts, that all information can be migrated.
Identity management. Identity management. It's the in term of it's like a user management itself. You need to determine the approach for identity management. It's single sign-on requirement. Will identity exist in the cloud only, or do we need to connect with on-premises identity? So this identity management come into the picture when coexistence take place. तो ये होता है माइग्रेशन ऑप्शन की डिसीजन फैक्टर की लार्ज मीडियम स्मॉल कोएग्जिस्टेंस सिंपल मींस कि आप डायरेक्टली आप क्लाउड में रहना चाहते हो या ब्रिज करना चाहते हो तो कोएग्जिस्टेंस में नीचे में दोनों प्रोविजनिंग डसिंग मैनुअल बल्क इंपोर्ट automatic dusting is a tool that used to sync user from cloud to on-prem. Manual bulk and import, you will create a CSV file. Automatic depends upon what kind of process you're taking, like cutover migration, stats migration. Like in hybrid migration, the automatic process take place. Migration source, Exchange, IMAP, Lotus Notes, Google's, just an examples. Identity management like on-premises, single sign-on, on cloud. Like cloud में भी यूजर होते हैं तो उसको आइडेंटिटी मैनेजमेंट मिलता है. सिंगल साइन ऑन लाइक यू डोंट नीड टू सिंगल साइन ऑन आपके इन्वायरमेंट में है कि नहीं है, आप उसको क्लाउड में भी लाना चाहते हो कि नहीं लाना चाहते हो. You can migrate mailboxes from Exchange server or from migrate email from another email systems. A customer can import their own email contacts and other information to an Office 365 created for them. So there are three types of email migration that can be made from Exchange server. Exchange server इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि depending upon it, IMAP it's like not required for the Exchange server. It can be used for Exchange server depending upon it, but mostly people use for cutover migration. So there are three when you're using the like आपके पास Exchange server है तो आप main तीन ये चीजें होती है. एक होती है cutover migration, एक होती है stage migration और एक होती है hybrid migration. Cutover migrate mailbox at once. You can use this of migration if your customer is running Exchange 2030, Exchange 2007, Exchange 2010 or Exchange 2013. And one thing cutover migration में you cannot use dosing, it need to be disabled, otherwise cutover migration का option ही नहीं देगा. Stage migration, migrate mailboxes in batches. This type of migration can be used with Exchange 2003 or Exchange 2007. Usually nowadays cutover migration और hybrid ही होता है. Stage बहुत कम इस्तेमाल करते हैं क्योंकि सर्वर उतना ही नहीं रहा है. 2003 और 2007 तो है ही. उस बाद कोई यूज नहीं करते, बहुत कम करते हैं. अब ज्यादातर तो लोग Exchange 2010 में ये जब सबसे ले क्या होता है ओल्ड सर्वर भी, मतलब ज्यादातर 2003, 2016, 2019 में रहते हैं. Hybrid migration, migrate using an integrated Exchange server and Office 365 event. This type of migration is used when you need to maintain on-premises and online mailboxes for your customer while you gradually migrate users and emails to Office 365. You have Exchange 2010 and want to migrate mailboxes in small batches. Over time, you have Exchange 2013, you can migrate it. If your customer has many large PST files, you can use the Office 365 import service to migrate email to Office 365. You can use this Office 365 import service to either upload the PST file to a network or to the mail PST files in the drive you prepare. इसकी भी अलग से एक आर्टिकल है for PST migration in Office 365 using network or drive. Migrate email from another IMAP-enabled emails. So this is an IMAP migration which is known as. You can use this Internet Message Access Protocol which is known as IMAP to migrate your customer email from Gmail Exchange. मैंने बोला ही था Exchange में भी IMAP इस्तेमाल हो सकता है, but usually depending upon the choices of the customer, it's better to use cutover or hybrid. Another email system that support IMAP migration. पर अगर आप Exchange सर्वर में और खाली एक मेलबॉक्स को माइग्रेट करना चाहते हो तो आई वुड नॉट रिकमेंड कि कटओवर जाओ और वो जाओ. आई वुड रिकमेंड कि PST जाओ या IMAP माइग्रेशन जाओ. When you migrate the user emails by using IMAP migration, only the items in the user inbox or other mail folders are migrated. Contacts, calendar items and tasks can be migrated with IMAP, but they can be by a user. IMAP migration also does not create a mailbox in Office 365. You will have to create for each user before you migrate their email.
करते हैं. Migration endpoint is a management object in Exchange Online that contains the connection settings and administrative credential from the source server that hosts the mailboxes that we want to migrate to Exchange Online. तो ये एक टाइप की एंड पॉइंट है जहाँ पे हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है कनेक्शन बनाने के लिए, उसकी क्रेडेंशियल, नीचे की एडमिन की क्रेडेंशियल, साथ ही साथ उसकी क्या बोलते हैं सेटिंग्स के साथ, लाइक विच सर्वर सब होस्ट के साथ. For certain migration types such as cutover or stage, the migration endpoint also defines the number of mailboxes to migrate simultaneously during the initial synchronization. And the number of mailboxes to synchronize simultaneously during incremental synchronization, which occurs once every 24 hours. ये आप जब stage या cutover migration में पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा the meaning between incremental synchronization and initial synchronization. इनिशियल सिंक्रोनाइजेशन में अगर सिंपल टर्म में बता दो तो जब आप कोएग्जिस्टेंट कर रहे हो जैसे स्टेज और ये हाइब्रिड में, जब आपकी सिंक्रोनाइज होके मेलबॉक्स ऊपर आ जाती है बट स्टिल आपका मेलबॉक्स जो है क्या बोलते हैं कंप्लीटली मूव नहीं हुआ, 98% में रहा है, पर सब ईमेल्स आर स्टिल देयर इन ऑन रेम जो करेंटली आ रही होते हैं. तब जब करेंटली आती है आपकी इंक्रीमेंटल सिंक्रोनाइजेशन जो करती है once in a 24 hours, वो दोबारा चेक करती है कि आपकी कोई ईमेल मैसेज छूटी है कि नहीं छूटी है, तो दोबारा वो सिंक्रोनाइज करती है. ये डिपेंड करता है कि आप इंक्रीमेंटल सिंक्रोनाइजेशन कितने दिन के लिए रखना चाहते हो. वंस यू आर श्योर कि ये आप कंप्लीट हो रही है तब फिर उसको स्टॉप करते हो. दूसरा शुरू करता हूँ हम बेसिक IMAP माइग्रेशन से. सबसे पहले IMAP ही करते हैं क्योंकि IMAP सबसे इजी है. तो IMAP के लिए स्टेप 1 क्या होता है कि आपका फुल नेम ऑफ योर करंट ईमेल सर्वर एंड योर जो सर्वर नेम होती है वो जरूरी होती है. So as a part of processing of deploying Office 3, you can choose to migrate the contents of user mailbox from internal message access protocol and email service to Office 365. Office 365 needs the name of the source email system, sometimes refers to as server, from which you want to migrate a mailbox. For Gmail, the server name is imap.gmail.com. Similarly, each like जो भी exchange होगा, जो भी exchange नहीं, जो भी server होगा, उनका खुद का server name होगा, वो हम डालेंगे. Step 2, add user to Office 365, which I mentioned कि आपको पहले ही आपको उस सेम नेम का यूजर क्रिएट करना पड़ेगा, साथ ही साथ आपको लाइसेंस भी लगाना पड़ेगा ताकि मेलबॉक्स रहे, ताकि वो जो डेटा है उस मेलबॉक्स में घुस सके. So you can add your user either one at a time or several users at a time. When you add a user, you also add a license to them. Each user has to have a mailbox on Office 365 before you migrate emails to it. Each user also need a license that includes an Exchange Online plan to use his or her mailbox. Up create a list of mailboxes to migrate. For this task, you can create a migration file like a CSV file to migrate the Office. The easiest way is to create a migration file in Excel. So we can use Excel in this structure. You can use it. So this Excel file is also known as batch file. So आप जब Excel खोल के आप user name, password, a full email address, a full name, username, email address and password. ये तीन चीजें, ये तीन information हमेशा होती है. When you create the migration file, you need to know the password of each mailboxes that you want to migrate. We're assuming you don't know the user password, so you will probably need to assign a temporary password by resetting the password to all mailboxes during the migration. You don't have to migrate all mailboxes at once. You can do them in batches at your convenience. You can include up to 50,000 mailboxes, one row for each user in your migration file. The file can be as large as 10 MB. So this is the list how it will look, the CSV file. मैंने कहा था ना email address, username, password, A1, B1, C1. So use the following screenshot as template, which आप देख ही रहे हो. To create the migration file in Excel, start with the heading in row 1. Make sure that they can match the picture exactly. Don't contain spaces. The exact heading name. कॉलम में आप दिख रहे हो तो मेरे को ये ज्यादा बताने का जरूरत नहीं समझ रहा मैं. कॉलम में is the email address of the Office 365 mailbox. That is what's shown to the user name. It should be same as from the source. Column B is the sign-in name for the user Gmail access. For example, Alberto Consenter. Column C is the password for the user Gmail mailbox. Connect to Office 365. To migrate Gmail mailboxes, the Office 365 needs to connect and communicate with Gmail. To do this, Office 365 uses a migration endpoint. ये steps है
right side पे migration endpoints is a technical term that describe the settings that are used to create connections so you can migrate the mailboxes. You can use a migration batch to migrate group of Gmail boxes to Office 365 at the same time the batch consists of all members. Yes, ये खत्म हो गया तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे होता है। ये एक्सचेंज एडमिन सेंटर में चले जाते हैं हम लोग एज वेल रिसिपिएंट्स में, वहां पे माइग्रेशन। सो यहाँ में दो तरीके, माइग्रेट फ्रॉम एक्सचेंज ऑनलाइन, ये जब आप ऑन प्रेम पे अपनी मेल बॉक्सेस माइग्रेट करने के लिए, और माइग्रेट टू एक्सचेंज ऑनलाइन। तो एज यू कैन सी रिमोट मूव, सो दिस इज what remote move is also known as hybrid migration. Okay, so do not get confused कि remote move migration आया, ये तो hybrid migration नहीं है, hybrid migration है ही नहीं। remote move is the another name of hybrid migration, stage migration. I don't recommend you study this one, stage migration, because nowadays nobody use it because 2003 and 2007 are now an obsolete product for exchange for Microsoft. अब सपोर्ट भी मुश्किल से 2010 का भी कुछ लाइक कितने तक है वो भी आइडिया नहीं है, मगर बहुत कम समय है 2010 का भी। कट ओवर माइग्रेशन, ये लेटेस्ट वर्जन जो भी है जितने भी है उसमें चलेगा। एंड दिस इज द IMAP माइग्रेशन इन गूगल वर्कस्पेस व्हिच आई टोल्ड यू अबाउट इट। दिस इज द लेटेस्ट, लाइक इट्स बीन हार्डली 1 or 2 years कि ये नया चीज गूगल का साथ इन लोगों ने कोलैबोरेट करके अलग से गूगल वर्कस्पेस माइग्रेशन उन्होंने कोलैबोरेट किया है। इसकी डिटेल्स बहुत कम है, बहुत छोटी सी है। सो ये देखा बेसिक ऑथेंटिकेशन, आप इधर में IMAP का सर्वर डाल सकते हो। ये बेसिकली दिस सेटिंग्स either the IMAP connection settings for the server you want to migrate or these settings will be used for other migration। तो ये यूजुअली ऑटोमेटिकली पकड़ लेती है, अगर आपके जैसे एग्जांपल जीमेल है वगैरह वगैरह है, you don't need to do it because कुछ चीजों में बेसिकली वो अपने आप से इसकी मतलब यूनिवर्सल सेटिंग्स होती है, वो अपने आप से उठा लेती है। अब यहाँ से सिलेक्ट फोल्डर्स टू स्किप और माइग्रेटेड, सेलेक्ट आइटम्स। अब ये डिपेंड करता है कि आप कैसे कौन से फोल्डर्स आप एक्सक्लूड करना चाहते हो। सिलेक्ट आइटम्स टू बी माइग्रेटेड, यहाँ से आइटम्स कहाँ से चूज आइटम्स बिफोर द टाइम, ऐसा करके सिलेक्ट कर सकते हो। पर मैं ऑटोमेटिकली स्टार्ट द बैच या आप मैनुअली करना चाहते हो, जैसे होगा न्यू क्लिक करेंगे and start it and it will make the connections when the migration has been completed, it will be done। but before that एक चीज मैंने बोली कि हमें यहाँ पे यूजर क्रिएट करना पड़ेगा, तो वो हमें जरूर करना, वरना माइग्रेशन स्टार्ट ही नहीं होगा। So this is how it will look। अभी आइडेंटिटीज अभी तक मेरे अंदर में बनाई नहीं है, तो इसकी वजह से वो स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। तो मगर आप बेसिकली नॉर्मल स्टैटिस्टिक भी अगर देखना चाहोगे तो यहाँ से आप देख सकते हो। सो आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।